Now for exercise 9.27, the question is an angular magnification of 30x is desired, मतलब 30 times is desired using an objective of focal length 1.25 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope? How will you set up the compound microscope means what should be the distance between objective and eyepiece? If we say for the microscope, then just consider this one is the objective lens and this one is the eyepiece, and for the object it's from the image, then this distance it's called image distance VO, and image formed by the objective acts like virtual object for the eyepiece. That's why this distance is called as a UE, object distance for eyepiece. If we calculate image distance for the objective and object distance for the eyepiece, then easily we can calculate by adding this distance between objective and eyepiece, and this is our answer. How will you set up compound microscope? Once again, if it is asked how will you set up compound microscope means we have to derive the distance between objective and eyepiece lens. For that, total magnification is given. Then if we list out, then magnification is 30 given. This is the total magnification for the microscope, and focal length of objective given, that we can say FO is equal to 1.25 centimeter, and the focal length of eyepiece given, FE is equal to 5 centimeter. Here we have to consider the normal vision. Then for normal vision, we can say the final image distance, that is image formed by the eyepiece, we can say that is VE is 25 centimeter. Here we have to consider for the normal vision the final image distance as a 25 centimeter. And now from this, from the total magnification, by one we have to calculate magnification for the objective, magnification for the eyepiece. तो यहाँ से हमें magnification for the eyepiece मिल जाएगा. We can say magnification for eyepiece, that we can say ME, and for the normal vision that is 1 plus D upon FE, and 1 plus it is 25, and focal length of eyepiece is 5. That's why it is 1 plus 5, 6. Magnification for the eyepiece is 6. But the magnification, total magnification, we can say it is MO into ME for the combination of the two lens, objective and eyepiece. Therefore, total magnification is 30. Magnification for the objective MO, for the eyepiece magnification is 6. That's why magnification for the objective is 5. And objective lens always form inverted image, real and inverted. So for real and inverted image, we have to consider magnification as a -5. Now, if we consider the formula for the magnification, that is V by U, but for the objective VO upon UO, that is -5. Therefore, VO is equal to -5 UO. अब
अगर यहां से हम लेंस फॉर्मूला यूज करें, यूजिंग 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO, तब 1/FO focal length for the objective is 1.25. Here VO is minus 5UO and it is minus 1/UO. अब अगर हम LCM ले ले 5UO, therefore -1 और ये यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई करना पड़ा and it is 1.25. That's why अगर हमें UO कैलकुलेट करना है तो इसको सब्जेक्ट कर दो, तो ये होगा -6/5 इंटू 1.25. तो 6/5 इंटू 1.25, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज माइनस. अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 1.5 सेंटीमीटर है फ्रॉम दिस इक्वेशन, देयरफॉर VO इज इक्वल टू -5UO, therefore it is -5 into -1.5. तो 1.5 into 5 that is 7.5 सेंटीमीटर. तो हमें मिला इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, VO हमें मिल गया. अब हमें कैलकुलेट करना है ओनली UE, मतलब वट एवर द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एक्ट्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस. तो अब UE कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जैसे FE की इक्वेशन है, मतलब FE है हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड इट्स फॉर्म इमेज एट नियर पॉइंट दैट इज VE 25 सेंटीमीटर. फ्रॉम बोथ वी कैन कैलकुलेट UE. अब यहां से यूज करें हम फॉर आई पीस 1/FE is equal to 1/V minus 1/U. अब 1/U के लिए it is 1/VE minus 1/FE. According to sign convention, the VE that is D, यहाँ पर जो इमेज मिलेगी वो, और वो 25 सेंटीमीटर बट -25 सेंटीमीटर. तो -25 मतलब -1/25 and focal length for the eyepiece is 5 centimeter. That's why it is 5. तो अगर हम इसका LCM ले तो ये होगा 25 सेंटीमीटर. अब 25 मतलब 25 होगा तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 and -1 that is -6, that is UE. अब अगर UE कैलकुलेट करना है तो बोलेंगे 25/6 एंड 25/6 हमें मिलेगा 4.16 सेंटीमीटर, दैट इज नेगेटिव. लेकिन हमें ऐड करना है इसको, इसलिए इसको हम पॉजिटिव यूज करेंगे. देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस दैट इज VO प्लस UE. तो VO हमारा हुआ 7.5 प्लस 4.16, दैट इज 11.66 सेंटीमीटर. तो अगर हम दोनों लेंस का बीच का डिस्टेंस 11.66 अदरवाइज 11.7 सेंटीमीटर बोल दे, देन हमारा जो भी माइक्रोस्कोप है वो बिल्डअप हो जाएगा. बोला है कि हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये दो डिस्टेंस है 11.7 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का, तब सेटअप होगा. Now for the exercise 9.28, the question: a small telescope has an objective lens of focal length 140 centimeter and
the eyepiece of focal length 5 centimeter. Then what is the magnifying power of the telescope for the viewing the distance object when telescope is in for the normal adjustment? That means final image at infinity, and the final image is formed at the least distance, that is 25. मतलब हमें करना है magnifying power for the telescope whenever it is in normal vision. Normal adjustment means इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी. जैसे ही ये टेलीस्कोप इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म करे तब इसका मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा. एंड अगर ये नॉर्मल विजन पर उसकी इमेज फॉर्म करे तब उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा. दोनों के लिए अगर हम ऐसे लिस्ट बना दे, देन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट इज FO इज 140 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ फॉर द आईपीस इज 5 सेंटीमीटर. अब अगर हम बोल दे कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर normal adjustment we can say magnification is FO upon FE, that is 140 upon 5. अगर हम 140 upon 5 कर दे that is 28. Then for the normal adjustment means whenever this type of telescope form image at infinity, its magnification is 28 times. Now, for the second part, image form at least distance means at 25 centimeter. Then, for image at least distance, we can say magnification for MONME, मतलब for the objective and eyepiece. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए बोलेंगे दैट इज FO अपॉन FE, एंड यहाँ पर 1 प्लस ये होगा FE अपॉन D. For the microscope it is 1 plus D upon FE, but for the telescope it is 1 plus FE upon D. तो यहाँ पर ये तो हमें FO अपॉन FE जो है वो 28 तो मिलेगा. 1 प्लस FE इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 5 और ये होगा 25. देन 28 5 अपॉन 25.2, that is 1.2, and 1.2 into 28, that is 5.6. Then for the normal vision the magnification is 5.6. Sorry, the multiplication of 1.2 into 28 is 33.6. Then total magnification